आपण माने अपेक्षा करथिले ओपीएससी और यूपीएससी रो जो जनरल स्टडीज क्लासेस ए वर्ष केबे स्टार्ट हबो ऑलरेडी स्टार्ट हे जाईची एबेठू आपण मानकू सिस्टमैटिकली क्लासेस आपण को मिलिबा आरंभ करिवो जेमते गत वर्ष मानकर मिलुथला एबे मिलिबो तो कथा होची कोन आज क्लास रे आमे वर्ल्ड ज्योग्राफी डिस्कशन करबा वर्ल्ड ज्योग्राफी कथा होची वर्ल्ड ज्योग्राफी आमे आज डिस्कशन करबा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी रो ऑस्ट्रेलिया आज डिस्कशन करबा मु टिके चेक कर दो साउंड आछी कि नहीं गोटे मिनिट खाली तापरे आज क्लास को आमे बढ़ेबा दिस क्लास विल बी बाइलिंगुअल माने ओडिया और इंग्लिश रे क्लास रहबा साउंड खाली चेक करूछु मु रहबा साउंड खाली हां साउंड ठीक अछि थैंक यू वेरी मच सो इन दिस क्लास विल बी डिस्कसिंग ऑस्ट्रेलिया बिफोर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द you can say types of geography. After a few minutes, we will be starting this beautiful chapter, beautiful continent, Australia. So don't worry. Before starting, let's understand types of Australia, types of world geography, or types of, you can say, geography, which are relevant for UPSC and OPSC. UPSC, OPSC पाई geography रो कौन आसुची 2 मिनिट आमे टाइम देबा तापर आमे ऑस्ट्रेलिया को डिस्कशन करिया नमस्कार अभिनंदन आउथरे कथा होची ज्योग्राफी होची आपनकर बेसिकली दुई प्रकार गोटे होची वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गोटे होची इंडियन ज्योग्राफी पुणी वर्ल्ड ज्योग्राफी को विभिन्न कॉन्टिनेंट्स रे डिवाइड कराइची फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट हियर वी हैव नॉर्थ अमेरिका South America, Europe, Africa, Asia, Australia, Antarctica, and Arctic Ocean. Whatever those things we will be discussing in world geography part. World geography रे बा आपण कहि परिबे जो हमर कॉन्टिनेंट्स अछि एशिया अछि अफ्रीका अछि यूरोप अछि जहां भी अछि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ये सब हमें डिस्कशन करिया एवं लास्ट रे हमें अंटार्कटिका मध्य डिस्कशन करिया किंतु आज रे क्लास रे स्पेशली आमे डिस्कशन करबा दिस ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया कथा होची ई जो ऑस्ट्रेलिया आपण मन देखुचंती देखंत ऑस्ट्रेलिया टा ये ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली एथि पय इंपोर्टेंट गोटे दिटा क्वेश्चन प्रति वर्ष ए ऑस्ट्रेलिया चैप्टर आछ इट मे बी इन यूपीएससी और ओपीएससी यू विल फाइंड एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर मु लेखा लिखी आरंभ करी किंतु टिके आग बेसिक जिनस आपन को स्टोरी माध्यम रे जणाउची हमर ऑस्ट्रेलिया 89 पेज रे जो अछि हमर मटेरियल रे मु सेउठु ही बुझौची त आपन मन पाखरे जो मटेरियल थिबो आपन सेटु पढी पारे ओडिया हो कि इंग्लिश हो सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑस्ट्रेलिया राइट आपन जे पृथ्वी को देखिबे सदर्न पार्ट रे इन द सदर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड यू विल फाइंड ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया सदर्न पार्ट रे अछि आपण माने देखंतु सदर्न माने सपोज दिस इज अर्थ ना सो नॉर्दर्न पार्ट इज हियर सदर्न पार्ट इज हियर योर राइट हैंड इज ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड इज योर वेस्ट भलरे बुझंतु आपनकर हेड होची नॉर्थ लेग होची साउथ ईस्ट होची राइट हैंड वेस्ट होची लेफ्ट हैंड तो आपण माने दे क्लियरली देखिबे बुझी परिबे जे ऑस्ट्रेलिया कोठी अछि southern hemisphere southern hemisphere means this wala part is called northern hemisphere and this wala part is called southern hemisphere northern southern right बुझियो छी तो कथा होची southern hemisphere रा ये ऑस्ट्रेलिया अछि ऑस्ट्रेलिया विषय रे दु चारटा पॉइंट आके हम जानिबा तापर मु लेखा लिखि स्टार्ट करी ठीक कथा होची जो ऑस्ट्रेलिया यार एक्चुअली देखिए जदि इन 1770 1770 मसीह रे बा 1773 मसीह रे कैप्टेन जेम्स कुक आसीथिले माने जेमति इंग्रेज माने हम देश को आस्थिले ठीक से बळी
कैप्टेन जेम्स कुक डिस्कवरी करथिले काहाकू ऑस्ट्रेलिया मु सब लेखिबी व्यस्त बारे किछ नै आग बुझौची 5-10 मिनिट तापर हमें लेखा लेख करबा ठीक सो ऑस्ट्रेलिया वाज डिस्कवर्ड बाय कैप्टेन जेम्स कुक इन 1773 फर्स्ट पॉइंट ये हूँ प्रथम कथा द्वितीय कथा हूँ ये ऑस्ट्रेलिया दिस ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड कंप्लीटली इन सदर्न हेमिस्फीयर बा दक्षिण गोलार्ध रे ऑस्ट्रेलिया अच्छी बोली आपण माने जानते मु ओडिया इंग्लिश दुईटा कहूची लेखिबी ओरिड हवार नाही आमे लेखिबा टिके आग मैप टा बुझौची ये जो ऑस्ट्रेलिया देखुचंदी या मझिरे आपण गोटे लाइन पाइबे हमर जेमति तीनोटी लाइन अछि गोटे होची इक्वेटर विषुवरेखा आ गोटे होची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आमे डिटेल्स डिस्कशन करिबा पेशेंस रखा पड़िबो इक्वेटर विषुवरेखा and this one is your tropic of cancer and this one is your tropic of capricorn simply you can say tropic of capricorn जोटा कि माने मकर क्रांति और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न passes in the middle of the continent माने ये जो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया देखुचंदी ये कॉन्टिनेंट रो ठीक मझिरे आपनकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करूची and this tropic of Capricorn divides Australia into two equal halves माने ऑस्ट्रेलिया को अपन जो देखुचंदी मझिरे जाइछ कोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जोटा कि ऑस्ट्रेलिया को दुईटा पार्ट रे डिवाइड करूची मन रखिबार अछि किछि मु कहि सारे तापर हम लिखिबा ठीक आ गोटे कथा होची जे ऑस्ट्रेलिया जो अछि एटा जानंतु चारि पटरे ओशन अछि ये गोटे एमितिया गोटे देश एमितिया गोटे द्वीप एमितिया गोटे महादेश जार यूनिकनेस अछि you will find lots of uniqueness in the continent of ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट रे बहुत बड़े यूनिकनेस बा विशेषत्व अछि प्रथम कथा होची ये होची गोटे देश गोटे महादेश आ गोटे द्वीप एकाधार रे द्वीप महादेश बुझि परछ द्वीप महादेश देश बा द्वीप देश महादेश माने देखो चारि पटर वाटर बॉडी अछि ना नहीं we will be discussing all those water bodies definitely very soon and you will find also this is one country and this is also the smallest continent in terms of area in terms of size Australia is the smallest continent in the world सारा पृथ्वी रे सबुठे छोटो महादेश हम पिला बेले पढिचंती से होची आपनकर ऑस्ट्रेलिया ठीक द्वितीय कथा होची ये होची गोटे देश ऑस्ट्रेलिया गोटे देश को आज आपण में जानछन तृतीय होची ये होची गोटे द्वीप मध्य आइलैंड व्हाट इज आइलैंड इज यू नो सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज so you can say this is island this is one country and this is also one you can say continent country continent island तीनोटी जिनिस मन रखिबे ठीक चलन मु चेष्टा करूची गोटे लेखा लेखी करबा ठीक अछि लेखा लेखी स्टार्ट कर दवा किछि ओरिड बार नै लेखा लेखी हम स्टार्ट कर दवा आसी गेला एथरो ठीक so we'll be now discussing in this blackboard you can say okay you see I am drawing Australia it's clearly visible don't worry and I will explain everything don't worry okay what I mean to say right किछि व्यस्त नहीं कौन जिनिस हम बुझे देबे ऑस्ट्रेलिया माने हम चमत्कार बुझे 14 वर्ष तळे बिफोर 14 इयर्स आई स्टार्टेड टीचिंग इन दिल्ली एंड ए पर्यंत चली ठीक तो मु आपण माने कहूची सेतबेले तो डिजिटल बोर्ड नथिला सेतबेले व्हाइट बोर्ड रे कला चौक रे धला चौक रे हमें नाली चौक रे सब लेखुथुलु तो से जा हो सेतबेले सुविधा नथिला जेतबेले हमें आईएएस प्रिपरेशन करथुलु एटलिस्ट एबे आपण मानक पई किछ ना सुविधा अछि सो एनीवे से कथा हम परे ही परिबा सो व्हाट आई मीन टू से नाउ आई एम ड्राइंग दिस ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया राइट दिस इज ऑस्ट्रेलिया म आपन सब बुझे देबी 10 मिनिट लागबे को बुझिया पई दिमाग पूरा रेडी कर रखन देखंतु एटा को आजे ऑस्ट्रेलिया ये न जानि छ ऑस्ट्रेलिया कोन समस्त आके ऑस्ट्रेलिया जानि छ एटा टिक लिबे दे
So this is Australia. Australia. प्रथम पॉइंट आप मन रखिए ऑस्ट्रेलिया इज यू कैन से आइलैंड माने द्वीप आइलैंड द्वीप आप लिखे नीचे ठीक द्वीप सेकेंड पॉइंट इज दिस इज ऑल्सो वन कंट्री ये गोटे देश मध्य राइट एंड दिस इज ऑल्सो वन यू कैन से कॉन्टिनेंट ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंट एंड इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड दिस इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट यू कैन से स्मॉलेस्ट राइट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन माने आपन को जानिबार अछि जे ये कोन ऑस्ट्रेलिया गोटे द्वीप गोटे देश आ गोटे महादेश स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट राइट स्मॉलेस्ट महादेश मो लेखुने ओडिया रे महादेश आपन मन समस्त लेखि पारे ठीक रेडी नाउ विल बी डिस्कसिंग या विषय डिस्कशन करवा किए को डिस्कवरी करथिले हम एक्चुअली चारोटी जिंस माइंड रखिबा गोटे होची यार बैकग्राउंड कोन माने बैकग्राउंड विषय डिस्कशन करिया बैकग्राउंड ठीक एक नंबर रे बैकग्राउंड विषय डिस्कशन करिया क्लियर दुई नंबर हम डिस्कशन करिवा पॉलिटिकल फीचर्स पॉलिटिकल माने मैप विषय टिके डिस्कशन करिया पॉलिटिकल मैप बोल कहि परिबे बा फीचर्स कहि परिबे तीन नंबर है फिजिकल पार्ट so physical part we will be discussing physical map but physical part we will be discussing about Australia physical part विषय discussion करिबा एवं तीन नंबर हैगला चारि नंबर रे हमें मिसलेनियस माने जहा किछि बाकी रहि जो ताको मध्य डिस्कशन करिया राइट ओके प्रथम कथा होची हु डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया जोटा के मटेरियल अछि आपण माने पढि देबे क्लियरली कैप्टन जेम्स कुक डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया प्रथम ये पॉइंट ता मन रखियो एक कथा मु बुझाई देछि जेम्स कुक डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया जेम्स कुक डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया कैप्टन जेम्स कुक डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया राइट ये जो जेम्स कुक थे 1773 रे माने डिस्कवर करथिले एटा आपण मन रखिबे मु भाबछि आपण माने बुझी परथिबे कैप्टन जेम्स कुक पूरा क्लियरली लिखा है यहाँ पर हमको डिस्कशन करिया अछि कंगारू विषय तो जानि जंदी कंगारू विषय रे कहब कंगारू इज द नेशनल एनिमल एंड क्रिकेट इज द यू कैन से नेशनल गेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया नेशनल ये सब जिनस आपण मन जानि चंदी एक्चुअली कंगारू जो नाटा आसला आम पिला बेले जानी हाउ दिस कंगारू बिकेम नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया रो नेशनल एनिमल केमती हैला कंगारू एक्चुअली व्हेन few Britishers and Scottish people reached on the surface of ऑस्ट्रेलिया रो सरफेस रे जतले पहुंचले ऑस्ट्रेलिया रो माटी रे जतले पहुंचले कैप्टन जेम्स कुक दळ बळ नै करी आसीथिले कोठु यूरोप रे पहुंचला पर कोन हला 1773 मसिया रे कोठ कोठ 1770 लिखा आइछि सेतले से देखले गोटे एनिमल माने अछि माने से जो कूल रे देखले तो से समय भाबले एटा कंगारू तांको लैंग्वेज कहउथले माने ये को टाइप रो एनिमल तबे से जा हो ताकू धीरे धीरे कोन हला ना कंगारू तार ना हेगला से पशुर ना हेगला एंड आपण में जानि चदी कंगारू इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया national animal of India, you know, tiger. Before that, in 1972, lion was the national animal of India. We know we'll be discussing in Indian geography, so don't worry for that. So let's understand the other parts. आमे वर्तमान political map विषय डिस्कशन करिया कहा विषय डिस्कस था political map व्यस्त और किछ नाही आसंता क्लास रे और डिटेल्स हबो एबे मो हाथ रे आग बुझेउची तापर हमें डिजिटली पूरा बढ़े बढ़े जीवा ठीक तो चलतु एक टिके मु इरेज करे मु आपन वर्तमान गोटे जिंस देखाउछि मु आपन वर्तमान कोन करी बुझे भी देखंतु वर्तमान आपण मानक मु बुझेबी पॉलिटिकल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपण होते पॉलिटिकल पार्ट कोन
आज्ञा देखो आपण मैंने सिडनी ना शुणी कानबेरा ना शुणी ब्रिस्बेन ना शुणी ठीक मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड शुणी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड शुणी ना नहीं पर्थ क्रिकेट ग्राउंड शुणी इंटरनेशनल क्रिकेट से हुए ये विषय में हम डिस्कशन करिया यू मे बी थिंकिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस कौन डिस्कशन करिया को जाउछ कथा होची गोटे फार्मूला मन रखिबे ता पूर्वरु आपण माने जणे देवा चाहूची now I will be discussing the major cities of Australia. I repeat, now I will be discussing the major cities or capital cities of Australia. Australia रे capital cities को आमे डिस्कशन करिबा तार गोटे फार्मूला आपन कहबी श्योर इटा टे लिबे दउची तापर हम आपन फार्मूला कहबी ठीक अछि फार्मूला टा जरूर कहबी आपन मानको फार्मूला गोटे कहबी मन रखिबे सपोज आप +2 पढ़ी तापर आप बीएससी पढ़ले कौन पढ़ले बीएससी बीएससी ठीक बीएससी पढ़ले पुणी आपनकर कौन मन है आपण माने पढ़ले एमए करले कौन करले एमए करले ठीक मास्टर इन आर्ट्स कले देन ऑल्सो यू नो आफ्टर एमए यू डिड पीएचडी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज गोइंग टू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ये भी बुझेबा इटा कौन बुझेबा व्यस्तार किछ नै इटा आउथरे भलरे पिक्चराइज करिया ठीक है जेटा लिबे दउचे बे इटा एक्चुअली न्यूजीलैंड मो जेतला आपन को बुझेबी ना सब बुझी पारे किछ असुविधा नै लेट्स अंडरस्टैंड एक्चुअली बीएससी एमए पीएचडी कोन आगे जानत कथा होची ये जो आपन देखु नांती ऑस्ट्रेलिया माने आपनकर कोन कहले स्टेट्स जेमिति इंडिया आम देशर जेमिति स्टेट्स अछंती ठीक से बोलिए ऑस्ट्रेलिया देयर आर 6 स्टेट्स इन ऑस्ट्रेलिया देयर आर 6 स्टेट्स इन ऑस्ट्रेलिया क्लियरली मन रखिबे इन द मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया रे 6 स्टेट अछि देखंतु 1 2 3 4 5 6 ठीक 1 2 3 4 5 6 7 8 आपण हबी 8टा केम थले एटी 6टा केम थला सब बुझेबा ठीक कथा होची दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दिस इज कॉल्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेट्स पर हम ये फार्मूला को जीवा ठीक अछि ठीक धैर्य धरिबे बुझीबार अछि ओएस एते सहज रे आईएएस एते सहज रे ही जाय रे बहुत मेहनत करे पड़े भाई साहब किसी का बात सुनने से थोड़ी होता है ओएस आईएएस बहुत काफी मेहनत करना पड़ता है पेशेंस रखना पड़ेगा 10 मिनट रुकिए सारे चीज हो जाएगा This state is called Western Australia. This is called Western Australia. मैं आपको सबू बुझे Western Australia, right? Western Australia. Good. And अपन material देखो तो सब लिखा है. This वाला portion you can say Northern Territory. Northern टेरिटोरी सिंपल सब बुझीबा बर्तन नॉर्दर्न टेरिटोरी ठीक अछि नॉर्दर्न टेरिटोरी अपन देखंतु पूरा जोटी मटेरियल अछि अपन देखै दउछि अपन मानको क्लियरली लिखा है छै अपन तो सेमी तो देखे हबन ना मो गूगल करी भी देखे देबी म आपन को देखौछि एटी लिखा है कैपिटल सिटीज पूरा देखंतु ठीक अछि एटा ही बुझौछु मो हला सब बुझे देबी So anyway, this is Northern Territory, this is Southern Territory. ठीक अछि क्लियर जदि असुविधा होछि मु बर्तन आपन जो चाहिबी माने गूगल माने सर्च करी देखै परिबे किंतु से तो जिबा दरकार नै आपन मटेरियल ले देखंतु क्लियरली लिखा है आपण माने जानी परिबे ठीक अछि म आपन कहूछि पेज नंबर कहि दउछि पेज नंबर कहूछि गोटे मिनिट के धैर्य धरंतु आपण गोटे गोटे पेज नंबर होछि 94 देखंतु पेज नंबर 94 रे माने सपोज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया देखिबे आपण ए साइड रे अछि ये सब टेरिटरी अछि ठीक अछि
तो कथा हूँ कौन ये एठी केमिति आसे मु कहूची आग लिखि दउची एक्चुअली BSc MA PhD एमितिया हेइच एक्चुअली धैर्य धर बुझी जातु एक्चुअली जो BSc अच्छी BSc MA PH ये कंट्री ना कहबी H आउटर D एटा को हमें बुझाय पाई जाउछन ठीक अछि अपन देखंतु ब्रिस्बेन ब्रिस्बेन क्लियरली लिखा है कैपिटल ऑफ क्वींसलैंड माने जो बी माने होची ब्रिस्बेन तो एठी भी मु लिखुची ब्रिस्बेन ये कहार कैपिटल क्वींसलैंड क्वींसलैंड तो एक जगह जो होची ए पोर्शन टा ये होची क्वींसलैंड और आटलास देखो क्वींसलैंड ठीक तापर देखो एस लिखा है एस जोटा एटा होची सिडनी सिडनी देखो पेज नंबर लिखा है सिडनी सिडनी होची न्यू साउथ वेल्स कैपिटल न्यू साउथ वेल्स और सी होची कानबेरा सी होची कौन कानबेरा एक्चुअली कानबेरा आपण भाबे कानबेरा जोटा सेटा कहार कैपिटल एक्चुअली जेमती हम इंडिया कैपिटल ना कौन इंडिया कैपिटल ना न्यू दिल्ली पूर्व थिला कोलकाता बा कलकत्ता सो न्यू दिल्ली कैपिटल केबे शिफ्ट हला इन 1911 द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू न्यू दिल्ली हां कि ना ठीक से बळी आपण मन रखिबे कानबेरा होची पूरा ऑस्ट्रेलिया रे कैपिटल जेमते हम ओडिसा रो कैपिटल होची भुवनेश्वर ठीक ठीक से बळी अन्य सब स्टेट रे कैपिटल अछि तो हम सब स्टेट रे कैपिटल लिखुचंदी जोटा कि 6टा स्टेट अछि ऑस्ट्रेलिया रो मेन लैंड रे एटा कोनती मेन लैंड एबे हमें जो कथा होउचंती एको मन रखिया पई BSc MA PhD ये सी अक्षर होची कानबेरा कानबेरा टा होची पूरा ऑस्ट्रेलिया रे कैपिटल द होल ऑस्ट्रेलिया रे कैपिटल कहि परिया का को कानबेरा तो ऑस्ट्रेलिया मन रखे धीरे धीरे हबो एका थरा आज्ञा हेइनी हमें भी बहुत कष्ट करला पर एको शिखिछु बुझौछ मु जानि करी एटा लेखि करी बुझौछि आज इमेज रे एथि पई बुझौनी आपण भी जानतो केते कष्ट रे को बुझिया पड़े लेखिया पड़े जानिया को पड़े काली ठु मु पूरा इमेज जेमते आपण इजीली हबो सेठी बसी के चटकन देखि देबे अच्छा एटा मु जानि छी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एटा क्वींसलैंड जानि छी न्यू साउथ वेल्स जानि छी मेलबोर्न जानि सब पटापट कहि देबे तो सेथिरे टिके आपण इजी हबो एफर्ट दवा पड़िबनी एटा जो मु करौछि आपण कोन हबो पेशेंस रखिया पड़ियो बुझि परछन कथाटा जदी सब इच्छा गुडा को घोड़ा हो जाता ताले भिकारी भी माने कौन घोड़ा चढ़ी दियो हाँ कि ना बहुत मेहनत काफी मेहनत के बाद इज्जत शोहरत आता है ऐसे नहीं आता है भाई साहब बुझे बहुत मेहनत करने पड़े तापर जाइक हवा आ मोर दृढ़ विश्वास आप OAS IAS निश्चय सिलेक्शन नेबे सो एनीवे आपण में टेलीग्राम चैनल जॉइन करिजिबे OAS टीवी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ना अछि टेलीग्राम चैनल जॉइन करिजिबे सो एनीवे What I mean to say, aim is Melbourne. अपन देखो से मटेरियल अच्छी मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड जानचंती सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जानचंती ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड जानचंती पर्थ भी क्रिकेट ग्राउंड अच्छी जानचंती जेमती लॉर्ड्स लीड्स ये सब कोठी अच्छी आपनकर यूके रे अच्छी हां कि ना सो हां एटा जो होबाट हम कथा हबा टास्मानिया रे कैपिटल होबाट से विषय कथा हबा तो वर्तमान मु जो कहली मेलबोर्न विक्टोरिया देखंतु कैपिटल मन रखि दियो किछि न विक्टोरिया एयर होचे आडेलेड रे कोन कोती टिके आपण भाबी के देखियो आडेलेड देखो कैपिटल पूरा लेखा आइछि ये होचे साउथ ऑस्ट्रेलिया माने ए जो एटा एक्चुअली साउथ ऑस्ट्रेलिया तो साउथ ऑस्ट्रेलिया कैपिटल ओ एट लिखियो ये हूँ साउथ ऑस्ट्रेलिया कैपिटल साउथ ऑस्ट्रेलिया आप लिखुवे नोट्स ठीक पी हूँ पर्थ गोटे क्रिकेट ग्राउंड पर्थ एक्चुअली एट अच्छे पर्थ हूँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैपिटल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बोली मन रख खाली आउ डिटेल्स पढ़े ठीक अच्छे ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैपिटल हूँ पर्थ रेडी ठीक यहाँ पर रहा कौन एच आउ डी
एच टा टिके हम लास्ट रे कहबी डी टा कहि दउची डी होची डार्विन 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 होची नॉर्थ ए जगह डी अछि डार्विन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया रे कैपिटल माने नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया कहया ठीक हेबनी नॉर्दर्न टेरिटोरी लिखिबे नॉर्दर्न टेरिटोरी सो कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न टेरिटोरी जो डार्विन ए जो एच कहउचंत ना एच होची होबार्ट HOBART होबार्ट होची काहर कैपिटल में कलर चेंज कर दे अपन टिके सुविधा हबो ये होची आपनकर टास्मानिया रे कैपिटल आराम से समझिए सो कैपिटल ऑफ टास्मानिया इज होबार्ट जो माने नुआ पिला जानि पर नथिबे एक्चुअली एई जगहटा होची टास्मानिया ये गोटे टास्मानिया गोटे कंट्री ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया राइट दिस इज प्योरली ऑस्ट्रेलिया वी नो दिस एंड दिस इज एक्चुअली टास्मानिया ये कंट्री ना होची टास्मानिया ठीक अछि ये कंट्री ना होची टास्मानिया ठीक अछि टास्मानिया कैपिटल होची होबार्ट एटी फ्रूट्स भी भलो मिले हम कथा बता विषय होबार्ट ठीक एटा गोटे फार्मूला बनेया पई मु कोन कली बीएससी एमए पीएचडी कली कोन कली बीएससी एमए बीएससी पर आपण एमए कले आ पीएचडी कले बीएससी एमए पीएचडी so you can easily remember all these capital cities of Australia BSc MA PhD B stands for Brisbane S stands for Sydney C stands for Canberra and M stands for Melbourne A stands for Adelaide and P stands for Perth and S stands for Hobart which is the capital of Tasmania and D stands for Darwin Northern Territory capital ei jaga re achi अच्छा ये तो बुझी है कथा हो ये जो कैपिटल अच्छी व्हाट वी डिस्कस राइट नाउ द कैपिटल्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया रो जो राज्य अच्छी मेनलैंड रे 6टा बाहर गोटे कंट्री अच्छी टास्मानिया जे जा भी हम डिस्कशन कले यार आउ कोन खासियत अच्छी ना एती कथा अच्छी कोन अच्छी all these capital cities are located you can say in the you can say seashore समुद्र रो कूल रे अछि माने एको कहि परिबे all capital cities are port cities I repeat all capital cities are port cities माने मन रखिबे जेतक कैपिटल आपण देखुचंत ना जेतक all these are ports बंदर जेमति चांदवाली होची कोन ओडिशा रो प्रथम पोर्ट and there are 13 major ports in India we will be discussing in Indian geography now you have to remember in the Australia there are you can say all capital cities are port cities remember all capital cities are port cities सबुडा को बंदर ठीक अछि पोर्ट एवं आउटा मजा कथा होची कोन प्राय ये जगह सब क्रिकेट खेल हुए क्रिकेट ग्राउंड अछि if you say in 1883 the first test cricket match was started in the world and Don Bradman you can say was playing in these cricket grounds जेमते हमर इंडिया रे सचिन तेंदुलकर जे भी अछंती सारा वर्ल्ड रे 99% स्कोर करथिले 100% पाखापाखि से होचन डॉन ब्रैडमैन he belongs to Australia and the cricket is the national game of Australia everybody knows this and national game of India is not cricket it's hockey and recently we know we enjoyed and also cherished World Cup hockey which is organized you can say by our state Odisha right whatever it may be we will be discussing in the current affairs class so now I discussed in the political part of Australia the capital cities and all capital cities are port cities and सबु कैपिटल सिटीज पोर्ट सिटीज एवं गोटे बड़ कथा सबुडा प्राय क्रिकेट ग्राउंड एति कथा क्लियर रेडी एबे देखिबा आ गोटे पेज को जाई होच कि नहीं यस आ गोटे पेज आसी गला ठीक अछि एति कथा क्लियर हे गला एबे हमें कथा बा फिजिकल फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया फिजिकल पार्ट को डिस्कशन करिया सेता हे गला पॉलिटिकल फिजिकल पार्ट
Physical part is very important when you are talking about any continent, maybe Australia, Africa, Europe. जहाँ भी पढ़ंतु ना कहीं जहाँ भी पढ़ंतु ना कहीं geography, physical part is most important because you have to know lots of things in the physical part like rivers, mountain ranges, states, water bodies, lakes, deserts and many more. बहुत कथा डिस्कशन करिया पड़िबो तो आमे कथा होचन ऑस्ट्रेलिया तो मु चेष्टा करू आपण ऑस्ट्रेलिया रो किछि माने बुझिया पई एबे ड्रॉ हे परला भलरे एबे बुझे आउ टिके सहज हबो कथा होच कोन कथा होच ए जो ऑस्ट्रेलिया अछि आमे फिजिकल पार्ट डिस्कशन करछन फिजिकल पार्ट रे मु भाबुची प्रथमे माउंटेन रेंज डिस्कशन आगे करूछ हियर यू विल फाइंड वन माउंटेन रेंज गोटे माउंटेन रेंज अछि माउंटेन रेंज बुझिया पई हम करूची माउंटेन रेंज राइट तो ये जो माउंटेन रेंज रा ना को यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स आल्सो दिस इज कॉल्ड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज कॉल्ड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज GDR this is called great dividing range the great dividing range अछि जो मोटा फुल लिखुछ great dividing आगा मु माउंटेन रेंज बुझेबी तापरे अछि बहुत कथा आगे अछि पेशेंस रखे पड़ी सो जोटा आपण वर्ल्ड रे हमर जेमते माउंट एवरेस्ट बा आपण कहबे हिमालय माउंट एवरेस्ट न हिमालय बोली बुझंतु सपोज दिस इज इंडिया राइट मु चटापट बुझिया पई करूची ठीक है बुझिया पई सो दिस वाला पार्ट इज कॉल्ड हिमालय राइट हिमालय सो व्हाट आई मीन टू से हिमालय इज द horizontal mountain range in the world are you getting my point this wala Himalaya is the horizontal mountain range in the world and if you talk about great dividing range this is the vertical mountain range I repeat this is called vertical mountain range vertical भाई साहब सीधा सीधा जोटा एमती सीधा vertical एमती हेगल कोन horizontal vertical horizontal हिमालय जे एमतिया horizontal आ जोटा हमर कोन त कोंदी ग्रेट डिवाइड रेंज vertical जदि आपण आउर अछि वर्ल्ड जियोग्राफी नॉर्थ अमेरिका जिबा साउथ अमेरिका जिबा सेठी आपण पाए vertical mountain range तब से जा हो व्हाट आई मीन टू से great dividing range is the vertical mountain range in Australia located in the eastern part of Australia. Australia रा eastern part रे कोन अछि eastern part रे अछि आपनकर ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न पार्ट रे अछि किछ नै बागे दोछ बनि गेला कि नै ठीक अछि एमति करबा ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न पार्ट रे अछि कोन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ए कथा आपण माने बुझी जांत एंड प्रति माउंटेन रेंज रे गोटे हाईएस्ट पीक थिबो कि नै से जेमते हम माउंट एवरेस्ट सारा वर्ल्ड रे हम माने जानथिबे एशिया रे भी तो म कहर अर्थ होछि ऑस्ट्रेलिया महादेश रो सबुठार उच्चतम शृंग जार ना होछि माउंट कोशियस्को कोन कोन तंगो Mount Kosciuszko is the highest peak of Australia. Highest peak of Australia, right? Can anybody say highest peak of South America, North America, Europe, Africa, right? If you know, you can write in comment box. But we will be discussing in all other continents. While discussing North America, South America, all these things will be discussed. So don't worry for that. So anyway, Mount Kosciuszko is the highest peak of Australia. It आपन मन रखिबे ठीक अछि एबे माउंटेन रेंज विषय कहि दे गोटे पार्ट मन रखे गोटे बड़ कथा होछि कोन ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखछन्ती ई जगह ना वर्ल्ड रा सबुठार अधिक कोरल रीफ्स मिले कोरल्स आपन कहबे कोन ओके कोरल्स व्हाट इज कोरल्स ये भी गोटे भलो क्वेश्चन देखंतो ए जो देखुचंती ऑस्ट्रेलिया ठीक अछि ऑस्ट्रेलिया जो देखुचंती एक्चुअली ये गोटे द्वीप ए चारि पटरे कोन अछि
वाटर बॉडीज अच्छे वाटर बॉडीज अच्छे ना वाटर बॉडीज ते वाटर बॉडीज रे जेमति एठी हमर लैंड रे जेमति लाइफ अछि मनुष्य अछंती पशु अछंती पक्षी अछंती जीव जंतु सब अछन ना ठीक से बेले एठी मध्ये गोटे मेराइन लाइफ अछि मेराइन लाइफ मीन्स वाटर बॉडी भीतर भी लाइफ अछि माने अधिका लाइफ जदि थाए वाटर बॉडीज अछि जेतो तांकर डेथ हे जाए सपोज या भीतर जे कोन रे तिमी थिबो माछ थिबो सब थिबो तो एंकर डेथ हो जाए सेना धीरे धीरे तल को जाती माने समुद्र तल को जाती एंड आफ्टर मिलियन इयर्स ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म हाँ प्रबल बोली भी कहते ठीक ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म मीन्स ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर all those natural factors right physical factors they convert into you can say rock he जाती ताकू कह जाए कोराल मृत प्रबाल बोली कहते नहीं तो से कोराल रीफ जोटा सारा वर्ल्ड रे जदि अधिक कोट मिलता है इन दिस पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया रो पूर्व भाग रे ए जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अच्छी कौन मिलता है सबुठ अधिका कोराल रीफ्स वर्ल्ड रे मिलता है ठीक अच्छे मैं भावुँ आपण मैंने बुझी पारे ठीक एनीवे वेरी गुड ये माउंटेन रेंज आ गोटे पेज को मुझे जाऊँ आ गोटे पेज देखिवा ही परछि कि नै यस आउ थरे आसला नाउ विल बी डिस्कसिंग डेजर्ट्स विषय डिस्कशन करिवा डेजर्ट्स जानतो जो मरुभूमि जेमति सारा वर्ल्ड रो लार्जेस्ट डेजर्ट इज योर सहारा एवरीबॉडी नो दिस ऑस्ट्रेलिया मध्ये दुई चारटा डेजर्ट अछि मन रखिबे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट प्रथम एटा होय लार्जेस्ट ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट सिम्पसन डेजर्ट जोटा कि टेलीग्राम चैनल भी कही सिम्पसन डेजर्ट गिब्सन डेजर्ट स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट एमती बहुत डेजर्ट अच्छी बट द लार्जेस्ट वन इज योर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट so great victoria desert is the largest one you can say this is the largest desert of Australia is your great victoria desert ठीक अच्छे एक कथा क्लियर हो गला आमे एबे डिस्कशन करिबा वाटर बॉडीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया ठीक वाटर बॉडीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया देखंतु वाटर बॉडीज भाई साहब वाटर बॉडीज एक्चुअली दिस इज कॉल्ड न्यूजीलैंड दिस इज कॉल्ड टास्मानिया वाटर बॉडीज एबे पढ़िया संग संग वाटर बॉडीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया पढ़िया टास्मानिया एंड दिस इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया एवरीबॉडी नो दिस ऑस्ट्रेलिया राइट so now we are discussing actually water bodies जो अच्छी ता विषय में एबे डिस्कशन करि देबा एक्चुअली ए जो एठी गोटे वाटर बॉडीज अच्छी एठी गोटे वाटर बॉडीज अच्छी एठी वाटर बॉडीज अच्छी एठी वाटर बॉडीज अच्छी एठी भी अच्छी ये सब वाटर बॉडीज चारि पट जाक ठीक टोटल का दीप ना टोटल वाटर बॉडीज ठीक वाटर बॉडीज को मन रखिया पे आपण गोटे फार्मूला कहबी एठी अछि बंडा सी गोटे अछि बंडा सी आराफुरा सी टिमोर सी बंडा सी आराफुरा सी टिमोर सी बंडा सी आराफुरा सी एंड टिमोर सी डोंट वरी आराम से मन रही भाई साहब सब आमर मटेरियल अच्छे पढ़ापढ़ी कर बंडा सी टिमोर सी आराफुरा सी यही जगार अच्छे अच्छा एटा केमती मन रखियो ये असुविधा कथा आगे सिंपल मन रखते एठी होची बी एठी इज ए एठी होची टी बैट हैला देखन बैट ऑस्ट्रेलिया नेशनल गेम कौन क्रिकेट तो भाई साहब बैट रे क्रिकेट खेलचंती आ कोन बुझी परछन कथाटा बैट हे गेला तापरे आपण गोटे कथा कहची एठी मध्य अछि वाटर बॉडीज ये जगह वाटर बॉडीज अच्छी एक्चुअली सेमी देखले ओशन टा पूरा अच्छी एपटर अच्छी इंडियन ओशन
एपटे अच्छे पैसिफिक ओशन तो कथा ता भितर जो छोट छोट सी अच्छी समुद्र अच्छी बोंडा सी आराफ्रा सी टिमोर सी एठी अच्छी कोराल सी माने कोराल जो अच्छी तो कोराल सी हो गला ता ना रे आउ कौन कोराल सी आउ ये जगह अच्छी कौन ये जगह अच्छी टास्मान सी कौन अच्छी टास्मान सी भाई सा टास्मान सी केमती ना हला कारण ये कंट्री ना हूँ टास्मानिया कौन कहते टास्मानिया कहती तो टास्मानिया ना रे टास्मानिया सी हो गला एटा हूँ न्यूजीलैंड कौन कहती न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड दुईटा द्वीप अच्छे हम कथा न्यूजीलैंड लिखी मुझे तो न्यूजीलैंड आउ ऑस्ट्रेलिया मझे जो अच्छी टास्मान सी अच्छी आउ थे भल बुझंतु ये हूँ बोंडा सी आराफोरा सी टिमोर सी नॉर्दर्न पार्ट रे ऑस्ट्रेलिया अच्छी इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया यू विल फाइंड बोंडा सी टिमोर सी माने आराफोरा सी टिमोर सी दैट राइट क्लियर है ठीक इन दिस ईस्टर्न पार्ट यू विल फाइंड कोराल सी आउ टिके एपट आसले टास्मान सी कथा होची एट जदी टिके बुझी जिवे सब बुझी जिवे कथा होची ये हला ऑस्ट्रेलिया रेडी हला गोटे कंट्री या पाखरे जो कंट्री टास्मानिया ये वाटर बॉडीज कहबे एको कहंती स्ट्रेट स्ट्रेट कौन बुझेबी स्ट्रेट मींस नैरो वाटर बॉडी सेपरेटिंग टू लैंड मासेस आर यू गेटिंग माय पॉइंट सब बुझेबी स्ट्रेट टा कौन बुझेबी एटा म एट लिखि दउची आपण स्ट्रेट कौन बुझेबी एक्चुअली स्ट्रेट माने सीधा नु स्ट्रेट माने होची नैरो वाटर बॉडी कथा आगे एटा बुझंतु आमे बोंडा सी आराफ्रा सी टिमोर सी कोराल सी सब बुझी गले बतन टास्मान सी बुझंतु टास्मान सी सेपरेट्स न्यूजीलैंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आपण कहि भी पारिबे टास्मानिया किंतु ऑस्ट्रेलिया को भी सेपरेट करछि नै सो यू कैन से टास्मान सी सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड राइट एबे कथा हबा स्ट्रेट विषय कथा हबा एक्चुअली ये जो स्ट्रेट आपण मान देखुचंती ये जो स्ट्रेट देखुन एटा एक्चुअली कौन स्ट्रेट मींस नैरो वाटर बॉडी स्ट्रेट माने कौन नैरो वाटर बॉडी माने जो जल प्रणाली बोली कहि परिबे नैरो वाटर बॉडी देयर आर वेरी इंपोर्टेंट वाटर बॉडीज कॉल्ड स्ट्रेट you will find in many parts of the world एठी गोटे स्ट्रेट अच्छी मन रखिए ये जो स्ट्रेट ना हो बास स्ट्रेट BASS बास स्ट्रेट ए स्ट्रेट ना कौन बास स्ट्रेट ये जो स्ट्रेट अच्छी तार ना हो कुक स्ट्रेट ये स्ट्रेट ना हो कुक स्ट्रेट माने कही छोट जल प्रणाली जोटा कि क्या अलग करे स्ट्रेट माने होची माने छोटिया नाଳ भरिया पानी थिबो दीटा लैंड को अलगा करथबो कोन तो ये होची बास स्ट्रेट का को अलग कर माने टास्मानिया ये होची टास्मानिया ऑस्ट्रेलिया टास्मानिया मझरे कोन अछि बास स्ट्रेट ठीक से न्यूजीलैंड जो देखुचंदी ये पार्ट को कहते नॉर्दर्न आइलैंड माने नॉर्थ वाला आइलैंड एको कहते साउथ वाला आइलैंड ठीक अछि दीटा द्वीप को नहीं न्यूजीलैंड है जार कैपिटल होची वेलिंगटन आमे न्यूजीलैंड सेपरेट भी पढ़िबा सो व्हाट आई मीन टू से कुक स्ट्रेट ये जो जल प्रणाली ना होची कुक स्ट्रेट सेपरेट्स नॉर्थ आइलैंड फ्रॉम द साउथ आइलैंड ये होची कथा क्लियर हैला टिके कष्ट होतबो कि बुझी होतबो ततै 43 मिनिट्स हैला मु आ बेसी कहबिनी पुणी काली नले पढेबा मु भाबुची एगोरा सब बुझी गेले ठीक अछि आउ कोन पढेबा एति कथा आपण माने भाबुची बुझी गले बहुत खुशी लागुच आपण माने बुझी परले काली आउ थरे आमे को डिस्कशन करिबा छोटे छोटे करिकी वाटर बॉडीज कहले रिवर टा कहि देबो ठीक अछि रिवर टा कहि देबो चलो रिवर डिस्कशन कर दबा एक्चुअली ए स्टेट सब कहि देली आउ गोटे स्टेट भी अच्छी ए स्टेट रो ना हो टॉरेस स्टेट एक्चुअली टॉरेस स्टेट भी गोटे अच्छी टॉरेस स्टेट कौन जानते एक्चुअली ये गोटे कंट्री ना हो पपुआ न्यूगिनिया कौन कहती पपुआ न्यूगिनिया टिके धैर्य धरतु पपुआ न्यूगिनिया ये कंट्रीटा पपुआ न्यूगिनिया ये हूँ कौन ऑस्ट्रेलिया तो पपुआ न्यूगिनिया और ऑस्ट्रेलिया मझे जो स्टेट टा अच्छी यहीटा कहते कौन टॉरेस स्टेट क्लियर भावुचे आपण माने बुझीगला ठीक अच्छे ये क्लियर है एबे हम कथा
अल्प टे कथा सरी एत पढ़े आउ टे सारद कहीं छाड़ा आपण टेलीग्राम चैनल जॉइन कर ओएसटी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल सो एनीवे आउ टे कथा हवा ना आउ टे कथा टे लंबा हो गला किंतु टे न कले असुविधा था देखु पुणी आसले आम ऑस्ट्रेलिया को यहाँ टास्मानिया ये हूँ ऑस्ट्रेलिया ये हूँ न्यूजीलैंड ठीक आउ टे बुझार अच्छे कौन बुझार अच्छी ये जो पार्ट ना ये जो पार्ट ये कहते गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया कौन कहते गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया मन रखिए गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया ठीक वर्ल्ड रे सब बड़ गल्फ हूँ गल्फ ऑफ मेक्सिको आम डिस्कसन करिया नॉर्थ अमेरिका रे किंतु ये जगह रे आपनकर गल्फ ना हूँ गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया ये जगह एक्चुअली टिके एमती हाथ रही तो ये जगह हूँ कौन पड़ला देखिए बैक करिए धैर्य धर आसवा तो मुस्किल जब न पार करिए आसीगला कभी के जाए एमती बुझे जिते भल चेष्टा कले बेले एमती हो जाए कि ना जा सो नेट ऑन अच्छी ना के सो एनीवे तो कथा हूँ कौन यही जगह हूँ गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया ठीक यहीटा तो मुझे यार ना हूँ बास अच्छा कौन मु देखु भूल पड़े दिली कि नहीं नहीं बास स्टेट कही बास स्टेट कही ना बास स्टेट कही ठीक अच्छे यहाँ हूँ बास स्टेट ये जो जगह हूँ बास स्टेट कही हूँ कुक स्टेट ये आउ टे क्लीयर होगा यहाँ हूँ न्यूजीलैंड दुईटा द्वीप को नहीं यही जगह कही कौन पपुआ न्यू गिनिया अच्छी पपुआ न्यू गिनिया अच्छी यहाँ कहते टॉरेस स्टेट एक्चुअली मु रिवर कहवाई जाऊँगी धैर्य धरतु एक्चुअली ये गोटे रिवर अच्छी जोटा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो माउंटेन रेंज अच्छी कारण रिवर सब तो यही जगह बाहर ना यार ना हूँ मुरे आ डार्लिंग दीटा रिवर मन रखिए मुरे एंड डार्लिंग मोर डार्लिंग बोली मन रख ठीक अच्छे इंपोर्टेंट रिवर हूँ कौन गोटे हूँ मुरे रिवर को आर लिखुची आउट डार्लिंग रिवर मोरे आउ डार्लिंग रिवर आपण माने कमेंट बॉक्स लिखिबे मटेरियल पढ़ी करी व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मोरे ना डार्लिंग मतलब लागु मोरे हबो मोरे की डार्लिंग आपण माने कमेंट बॉक्स लिखिबे ठीक लास्ट टाइम कथा हबा लेक विषय रे ह्रद मन रखी दियंतु ग्रेट विक्टोरिया माने जेमति ग्रेट विक्टोरिया थिला कोन आपनकर लार्जेस्ट डेजर्ट ठीक से भली ग्रेट विक्टोरिया गोटे लेक अच्छी ग्रेट विक्टोरिया लेक विक्टोरिया नार ना बहुत जिनस अच्छी वर्ल्ड रे इंडिया रे भी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल विक्टोरिया स्ट्रीट आप विक्टोरिया बिल्डिंग लंडन रे अच्छी विक्टोरिया डेजर्ट अच्छी एठी बहुत जगह विक्टोरिया शब्द पाइबे ग्रेट विक्टोरिया लेक हूँ लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज योर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लार्जेस्ट लेक हूँ ग्रेट विक्टोरिया लेक डेजर्ट भी से विक्टोरिया दीटा का ना समान अच्छी तो बेले मिस हो जाए मन रखिदेवे आ डिपेस्ट पॉइंट ऑस्ट्रेलिया इरी बोली मन रखिए डिपेस्ट पॉइंट समुद्र पतन रु डिपेस्ट पॉइंट कौन मुझे कहली दीटा शब्द दूची बाछिक आपण मैंने कहे EYRE माने ERIE या भीतर कोटा ठीक एक्चुअली ता ना इरी इज द डिपेस्ट पॉइंट ठीक है तो आपण माने मन रखिए क्लियर माने ना समान ए दीटा कोटा करेक्ट स्पेलिंग आपण माने कमेंट बॉक्स लिखिए ये सब मु बुझे देली 40 मिनट 50 मिनट लागला बरम स्टडी मटेरियल पढ़ीदेवे आ टेलीग्राम चैनल जॉइन कर जिवे हम नेक्स्ट क्लास रे फोन देखाबा बुझी बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस लव यू गाइज थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।